So lastly we have termination. ठीक है? So we know that DNA replication proceeds in a 5 prime to 3 prime direction, which is why the newly synthesized lagging strand जहाँ पे आपके Okazaki fragments बन रहे थे would lose their extreme 3 prime end after RNA primers are removed. Up 3 prime end you need to remember is away from the replication fork. That's why, और क्योंकि आपकी नॉर्मली जो रेप्लिकेशन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है और यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो रही है, तो दे वुड लूज देयर 3 prime ends when the RNA primers are removed. Therefore, the ends of chromosomes have special sequences called telomeres, which are copied by a special enzyme called telomerase from an RNA template to prevent the shrinking of the chromosome, especially the chromosome ends, ड्यू टू रिपीटेड डीएनए रेप्लिकेशन. अगर बार बार 3 प्राइम एंड रिमूव होता रहेगा तो फिर तो आपका क्रोमोसोम श्रिंक होता रहेगा और वन पॉइंट आपका पूरा क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो टेलोमेरेज का जो एक्शन है वो इस चीज़ को स्टॉप करता है. टर्मिनेशन रिक्वायर्स दैट द डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क मस्ट बी ब्लॉक्ड. So termination occurs at a specific position which involves the interaction between two components. एक होता है the termination site sequence in the DNA, and then a protein which binds to this termination site sequence to physically stop DNA replication. Like DNA, RNA is a nucleic acid and a polymer of nucleotides, and that is what we're going to be talking about next. And at this point, आपका DNA उसकी replication terminate हो गई है, and we are done with the biosynthesis of new strands of DNA.